Hello students of class 11. Today I am going to start Ranga's marriage, the third chapter of snapshots, in order to explain to you line by line the text of this story. Through the live lecture of mine, I had explained to you the very moral behind the lesson, the very story of the lesson, how the lesson relates itself to India and Indian language, and how English has been expressed as a special commodity among Indian people. That has also been explained by me. Today I am going to teach you everything line by line so that you can understand it easily. Now you see, I am going to start right from very beginning only. By the way, I had completed one paragraph, I know it well. When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage, why not Ranganath Vivaha or Ranganath Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girija Kalyana. The narrator is very funny person, Masti Venkatesh Iyengar. He starts the story in a very conversational way. In the very beginning of lesson, you will not find the story proceeding. In the very beginning, you will find that the narrator is talking everything, all nonsense, in ill direction or wrong direction, you can say. But let's try to understand. The narrator's first question to us is that, why the title is given Ranga's marriage only? The title could have been Ranganath Vivaha. Another title could have been Ranganath Vijaya, Jagannath Vijaya, Girija Kalyana. Now, according to writer, there could have been many possible titles of this lesson, but why is there only one title of the lesson that's called Ranga's marriage? But then this is not about Jagannath's victory or Girija's wedding. Narrator tells us here, the title of the story could be Jagannath Vijaya, Girija Kalyana only in the context if it were associated with Lord Shiva, if it were associated with Goddess Parvati. But it's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. Narrator tells us here. It is Ranga's marriage. That is why the story has been given Ranga's marriage only. There is no need of any kind of fancy title, imaginary title. Hosahali is our village. You must have heard of it. No? What a pity. But it's not your fault. There is no mention of it in any geography book. I would like to tell you from my personal side, Hosahali village is really located. It exists nearby Mysore in Bengaluru. Okay, in Bengaluru nearby Mysore, Hosahali village exists there, and the narrator in a funny way presents before us that Hosahali is not so much important thing for those geographers, those cartographers who mark the important places of the earth in geographical books or on geographical maps. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists, and so make no mention of it. Our people too forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. Narrator tells us here, sahibs sitting in England. It's the time of colonization when the narrator is explaining here. Sahibs in England means officers sitting in England, controlling India, have no time to think about Hosahali. And it is the situation that one sheep goes into the pit, rest of them follow it. Means it has become a tradition. If somebody does not care about a thing, so many people do not care about a thing. If somebody starts following something, so there are so many people standing in line to follow the same thing. So a thought has been given here. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. Finally, the narrator finishes his thought saying that his village Hosahali is no longer a popular village. It's not found in any geographical book because officers don't have time or don't have any kind of attitude towards it to present it on them, in the books. And if officers don't have any kind of importance regarding Hosahali, so a poor cartographer who prepares maps, he will also not present Hosahali. That's why Hosahali is no longer a popular village in the world. Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Kari Gadabu is to a festive meal, then Hosahali is to Mysore state what the filling is to the Kari Gadabu. Now you see, before independence, India was divided into various kingdoms. So Mysore used to be a state. Okay.
It used to be a different state, but nowadays it's no longer to be a state. It's a city within a state. So narrator tells us here, as the feeling of the sweet Karigadabu is associated with it. Try to understand it. Karigadabu is a sweet. It's a South Indian sweet. एक मिठाई होती है, अगर इसके अंदर जो फीलिंग होती है उसका जो रिलेशन इस स्वीट से होता है, इस मिठाई से होता है. द सेम रिलेशन इज देयर ऑफ मैसूर एंड होसाहली. कहने का मतलब क्या है? मैसूर एंड होसाहली बोथ आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड. होसाहली इज फाउंड विद इन मैसूर. What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hosahalli. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatt. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not in England. If anyone asks him whether he has been there, he says no. Anaya, I have left that to you. The village Hosahalli is very, entertaining. People of this village are quite funny, and there is a funny person in that village whose name is Gunda Bhatt. This Gunda Bhatt is a doctor by profession. He has visited many places of the world, but he has failed to visit England. If somebody has a question to Gunda Bhatt, sir, why haven't you visited England? So he used to give a plain answer to every person that he had left it for him. एक फनी वे है, एक डिस्क्रिप्शन है उस गांव का कि होसाहली में बहुत ऐसे भी लोग रहते हैं जो हंसी मजाक वाले लोग हैं. गुंडा भट्ट एक डॉक्टर का वहाँ पर नाम है, और ये गुंडा भट्ट क्या करते थे, विश्व में बहुत सारी जगहों पर घूमने टहलने के लिए जाते थे, और केवल इंग्लैंड वो नहीं गए थे. अगर कोई उनसे पूछता था कि आप इंग्लैंड क्यों नहीं गए, तो वो बोलते थे, अरे भाई ये तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है. रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेशर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी. ही यूज्ड टू से आई एम नॉट ए डॉग सफरिंग फ्रॉम फ्ली. उन्होंने क्या कहा कि मैं कुत्ते की तरह इधर उधर नहीं भटक सकता हूँ जिसके पीछे वो फ्ली, पिस्सू एक कीड़ा होता है कि वो कीड़ा जो उसके पीछे लग जाता है तो वो भागने लगता है डर के मारे. तो कह रहे मैं एक परेशान कुत्ते की तरह इधर उधर नहीं भाग सकता हूँ. आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी. Gunda Bhatt used to tell people that he had seen a few places in his life, but reality was that he had seen many places in his life. गुंडा भट्ट जो होसाहली के रहने वाले एक डॉक्टर थे, वो लोगों को हमेशा ही बताते थे कि दुनिया में कुछ ही जगहों को मैंने देखा है, लेकिन सच्चाई क्या थी, गुंडा भट्ट ने बहुत सारी जगहों को देखा है. अब अगली पर्टिकुलरिटी होसाहली के बारे में नरेटर हमको बताने जा रहा है. अभी स्टोरी शुरू नहीं हुई है. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. Narrator tells us here, mangoes are very much special in the village Hosahalli. Raw mangoes are very much special. Do not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahmarandra. Brahmarandra मतलब जिसको कहते हैं ना ब्रह्मांड फट गया है. ब्रह्मांड मतलब पूरा हेड जिसको हम लोग बोलते हैं, अपना सर. तो the mangoes, raw mangoes found in the village Hosahalli are very much, or you can say very intensely sour. Very intensely sour. And the sourness will enter your head. होसाहली गांव में पाए जाने वाले जो कच्चे आम हैं वो बहुत ही खट्टे हैं, और इतने खट्टे हैं कि आपके ब्रह्मरंध्र में घुस जाएंगे. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. How did the narrator come to know about the special quality of the raw mangoes of Hosahalli? इसका उसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि नरेटर ने भी खाया, उसके घर वालों ने भी खाया, कच्चे आम का चटनी बना हुआ था. उसके बाद इन लोगों को खांसी आने लगी. जब डॉक्टर से जाकर के मिलते हैं तो डॉक्टर गेव हिम द रिपोर्ट दैट इट वाज ड्यू टू दैट रॉ मैंगो विच दे हैड ईटन फ्रॉम द विलेज मैंगो ट्री. गांव के आम के पेड़ से कच्चे आम जो ये लोग खाए थे, उसी की वजह से इनको खांसी हो गई थी. इस तरीके की बात को डॉक्टर ने भी बताया. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. लो भाई, अभी तक तो गुंडा भट्ट डॉक्टर वहाँ पर गुंडा भट्ट थे, नाम ही उनका बड़ा अच्छा था. अब उसके बाद से क्या बात है, कच्चे आम जो हैं वहाँ पे इतने खट्टे हैं कि वो आपके मस्तिष्क में पूरा घुस जाएंगे, पागल कर देंगे, खांसी आने लगेगी. तीसरी स्पेशलिटी अब लेकर के नरेटर क्या आ रहा है कि जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. कि पूरे गांव में सब कुछ, हमारे गांव में जो कुछ भी है वो मैंगो की तरह ही स्पेशल है. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. इन द नियर बाई विलेज पॉन्ड, गांव के ही पोखरे में वहाँ पे क्रीपर आप जान रहे हैं ना, जैसे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वैसे क्रीपर लताएं होती हैं, जैसे सब्जियों वगैरह की लताएं होती हैं. तो ऐसे तालाबों में भी लताएं पाई जाती हैं, उसी में उनके पत्ते वगैरह फैलते रहते हैं. कुछ मान करके चलिए जैसे सिंगाड़ा होता है, वो भी एक लता ही है. तो उससे फ्रूट्स भी निकलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो पानी में भी उगते हैं, जलीय पौधे होते हैं. तो देयर इज ए क्रीपर इन द विलेज पॉन्ड. इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड.
It has very beautiful flowers and they look like a banquet for others. मालूम होता है जैसे दावत के लिए रखे गए बहुत अच्छे खासे डिश हों, इसके फूल इतने सुंदर हैं. Get two leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. Previously, what used to be the Indian tradition of serving food, that people used to eat food even on the leaves of banana. केले के पत्ते पर भी लोग खाना खा लिया करते थे पहले, या और भी कोई बड़े बड़े पत्ते होते थे उसी भोजन कर लेते. Narrator tells us here in the village pond of Hosahali there is a particular kind of creeper which is found, and if you use just two leaves of this creeper, so you need not worry about any kind of saucer, any kind of plate, any kind of what you say dish pot to serve meal. खाना खाने की आपको चिंता नहीं है, उसी पत्ते पे रख के खाना खा सकते हैं. You will say I am rambling. Narrator says you will say I am rambling. आपको लग रहा होगा कि मैं घूम रहा हूँ और घुमा रहा हूँ आपको. It's always like that when the subject of our village comes up. But enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you where Hosahali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? Narrator tells us here, now he would no longer explain about his village Hosahali, but it's a problem with him that it is mandatory for him to explain about Hosahali whenever the subject of his village comes there. कह रहा है भाई क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, जब कभी मेरे गांव का मसला आता है तो मैं उसके विषय में कुछ न कुछ बोल ही जाता हूँ. बाय द वे आप लोगों में से कोई विजिट करना चाहता है तो आकर के विजिट कर सकता है. यू जस्ट ड्रॉप मी अ लेटर एंड आई विल टेल यू द राइट डायरेक्शन टू रीच माई विलेज. नरेटर बहुत फनी में है, मजाकिया किस्म का है. कह रहा अगर आपको आना चाहते हैं, आप कोई लोग आना चाहते हैं तो मुझे एक लेटर लिखिए, मैं आपको बताऊंगा होसाहली कहाँ है. और फिर नरेटर ने इसी पर एक बहुत अच्छा थॉट भी दे दिया, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट. अगर किसी स्थान के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस स्थान पर आप विजिट करिए, वहाँ पर आप जाइए. ठीक. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. Now the narrator tells us about the rural context of his village, that his village people were not developed, standard and educated enough. And those days people did not dare to send their children for higher kind of studies, standard kind of studies in city areas because it needed money. But there was a village accountant. There was an accountant in his village. And he had the courage to send his son Ranga to the city of Bangalore for studies. So for the first time from the village of Hosahali, one boy whose name was Ranga, who was the son of the accountant of village, he went there for studies. He went Bangalore for studies. Condition of English was such that the people of Hosahali didn't know English. They didn't understand English. It's different now, but the narrator tells us present day it is very much different. There are many who know English. During the holidays you come across them on every street talking in English. Nowadays many people in the village of Hosahali talk in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. Kannada used to be the common language of every person living in the village of Hosahali. They did not understand English, speak English or use English, but nowadays they have started speaking enough of English. Now, what has happened is disgraceful. Believe me, the other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, how much should I give you? 4 pies, she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. Now you see. The narrator gives us a very simple example of the illiteracy of his village people, or you can say unawareness of his village people regarding English language. One day he was sitting at the home of one of his friends whose name was Rama Rao. एक दिन नरेटर अपने दोस्त रामा राव के घर पर बैठा हुआ. रामा राव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. आई वुड लाइक टू टेल यू. रिमेंबर दिस नेम रामा राव. रामा राव के घर नरेटर बैठा हुआ था. लकड़ी वाली लेडी आती है लकड़ी बेचने के लिए या पहुंचाने के लिए, जो आया करती थी. रामा राव का लड़का जाता है. शी वांटेड हर मनी. वो पैसा चाहती है. नरेटर रामा राव के लड़के ने पूछा कि हाउ मच मनी डू यू वांट फॉर योर वुड, फायरवुड, लकड़ी के लिए कितना पैसा चाहिए. तो शी टोल्ड दैट शी वांटेड 4 पाइस. 4 पाइस को आप 4 पैसे समझ लीजिए. वैसे 4 पाई होता है, पैसे से भी छोटा पाई हुआ करता था. आज भी लोग कहते हैं 1 पाई भी नहीं देंगे. तो उसने कहा कि मुझे 4 पाई इसके हो गए. तो रामा राव के लड़के ने कहा कि आई डोंट हैव चेंज मनी. द लेडी डिड नॉट अंडरस्टैंड.
वो चेंज समझती ही नहीं थी कि चेंज फुटकर कहते किसको है, इंग्लिश में चेंज नहीं समझती थी। उसने कहा चेंज नहीं है, कल आ जाना, कल आ करके ले लेना। द लेडी बिकेम एंग्री एंड शी स्टार्टेड मटरिंग ऑल इल अबाउट हिम, और समझ ही नहीं पाई चेंज वर्ड क्या होता है, और गुस्से से बड़बड़ाते हुए वह वहाँ से चली गई। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, आई टू डिड नॉट नो, लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। नरेटर ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड चेंज मेंट, नरेटर को भी नहीं पता था कि चेंज वर्ड का मतलब क्या होता है। लेटर ऑन ही वेंट एंड विजिटेड रंगा, बिकॉज रंगा had studied from a city, Bengaluru. So he went there and wanted to know what the word change, stand for, what the word change stands for. तो रंगा explained to him that change stands for फुटकर मनी, फुटकर पैसे के लिए चेंज वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो such was the condition of English in the village Hosahali. The priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. Now, this costly thing, English, was not a common thing in their village before 1 decade, before 10 years. That is why when Ranga came from Bengaluru, it was a great event for the villagers. They all were ready to welcome him. People rushed to his doorstep announcing. लोग दौड़ते भागते रंगा के घर पर चले गए कि आज वो आने वाला है, बाहर पढ़ने गया था, देखते हैं उसकी कंडीशन क्या होगी। लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का लड़का आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स, एंड कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक। फाइनली क्या हुआ कि गांव वाले देखे, कह रहे भाई जो लड़का बेंगलुरु पढ़ने के लिए गया था अब तो वो आ गया है, चलो चल करके देखते हैं। और सब लोग रंगा के घर पे जुटना शुरू हो गए। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked why have all these people come? There is no performing monkey here. Narrator went there. He was also attracted by the crowd. He went there and he questioned there in a very much funny way कि why have all of you come here? Is there any kind of performing monkey here? अरे भाई कोई बंदर बंदरिया का यहाँ खेल तो चल नहीं रहा है, तुम लोग इतने लोग आकर के यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर दिए हो। अब उसी में एक थोड़ा सा नॉटी टाइप का, चंचल टाइप का एक लड़का भी था, उसने क्या कह दिया। A boy, a fellow without any brains, said. There was a boy who did not have any kind of brains, who did not have any kind of manner of talking to his elders, loud enough for everyone to hear. खूब तेजी से उस लड़के ने नरेटर को जवाब दिया। What are you doing here then? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पर कोई बंदर का खेल नहीं चलता, आप ही क्या कर रहे हैं? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. When the narrator was responded in this way by a youngster boy, he kept quiet. He did not speak at all because he knew it very well. It was a matter of past now and he should not go further on discussion against this boy. So the narrator tells us about the very culture of the village of Hosahali. कि वहाँ गांव के लोग कैसे थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, एक दूसरे से बहस करना, फनी वे में लोगों का रहना, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करता है। तो रिमेनिंग थिंग्स आई विल गिव यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर थ्रू माय यूट्यूब lecture series only. Okay, thank you very much.